शादी अरेंज की है और ये एक लव जिहाद का मामला था, तो जिससे हमने उस लड़की को मुक्त कराया है। तो महीने में हर महीने एक आध तो शादियाँ हम लोग करवाते हैं लड़कियों की ला करके। Harshvardhan Singh and his group believe in a conspiracy theory called Love Jihad. They say Muslim men are hatching a plot to make India into an Islamic state by seducing and marrying Hindu women and forcing them to convert religions. Months before her Hindu wedding, this woman was in a relationship with a Muslim man. तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर के हमको पकड़ा, पुलिस में भी मुकदमा दर्ज था, तो पुलिस ने जो है तो अरेस्ट किया और इसके सामने ये संकट था कि फिर अब ये जाएगी कहाँ, क्या करेगी। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम आपकी शादी कराएंगे। Singh and his men regularly stop Hindu women from being with Muslim men and arrange marriages with Hindus instead. This bride's family says she's happy with the man who was chosen for her. But Singh didn't let us ask her ourselves. तो आपका काम पूरा तो बढ़ गया, ठीक है ना? बस लड़की को आशीर्वाद दो, बढ़िया खुशी रहे, कभी कोई जरूरत हो हम लोगों को लाएगा है तुम्हारा काम, हमेशा की है। ठीक है, धन्यवाद। Singh is from Uttar Pradesh, India's most populous state. He and his men are Hindu nationalists. हिंदू ना कभी झुका था ना झुकेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। For more than 2 decades, he's worked for a fundamentalist organization called the Vishwa Hindu Parishad. Singh now leads his district's chapter. पूर्व काल में तलवार की दम पर इस्लाम आगे बढ़ा और कई प्रकार के जिहाद करके वो आपकी जनसंख्या को घटा करके और अपनी जनसंख्या को बढ़ा करके इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। वो कभी आपके भाईजान नहीं हो सकते हैं, वो आपके दुश्मन हैं, तो वो हमेशा आपके साथ दुश्मनी ही करेंगे, हमेशा आपके साथ जो है गलत काम ही करेंगे, गलत ही सोचेंगे, आपका अपमान ही करेंगे। इसलिए हमको आपको सबको समाज को जागरूक करना है। जय मां भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। This isn't some fringe vigilante group. It's an important wing of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, or RSS, the country's largest Hindu nationalist organization. For almost a century, the RSS has been working to make India into a Hindu state, rather than a secular democracy. They've never been as influential as they are now. Prime Minister Narendra Modi, the Home Minister, Defense Minister, the President, and the Vice President are all alumni of the group and its affiliates. Critics say they're using their power to change India's laws and constitution to match the Hindu nationalist agenda. And it's people like Singh who are the foot soldiers of a pro-Hindu, anti-Muslim crusade. जिहादियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। तमाम लड़के ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, अब व्यवस्थाएं जो भी है, लेकिन उनको अच्छी मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराते हैं, अच्छे उनको कपड़े उपलब्ध कराते हैं, अच्छे जेवर उपलब्ध कराते हैं। Singh says Islamic clerics are teaching their followers to impersonate Hindus. He believes Muslims are paid bounties to charm Hindu women into converting. और हमारे समाज की जो बहनें हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनको अपने प्रेम जाल में फंसा करके और उनके साथ शादी करके और उसके बाद उससे 8-10 संतानें पैदा हुई, तो वो 8-10 संख्या उनकी बढ़ी। इस प्रकार से वो तो मशीन समझ करके काम करते हैं। तो वो हम लोगों के समझ में यही आया और वास्तविकता भी यही थी कि ये लव नहीं था, ये लव जिहाद था। There's no official data to back up any of these claims. At a school that he runs, it's a lesson that's taught to children. तमाम प्रकार के जिहाद अभी तक आप सबने सुने होंगे, लेकिन लव जिहाद का नाम शायद आप सबको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। जिहादी लड़के आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और आप सब लोग उनको हिंदू समझ करके उनके जाल में फंसते हैं। उन सब से आपको सबको आगाह करना आज हमारा धर्म है। हमारी बहनों को पथभ्रष्ट करते हैं और उनको हमारे समाज से अलग करते हैं।
और उसके बाद उनका जीवन नर्क बना देते हैं। हम लोग तब करेंगे जब जानकारी, बहुत से केस ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को ब्लैकमेल करके कुछ ऐसे चित्र, कुछ ऐसे चीजें आ जाती हैं जो आप लोग ना अपने माँ बाप से कह सकते हैं ना हम लोगों से कह सकते हैं। लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लोग आत्महत्या करने को भी बस हो जाते हैं, और वो लोग जब आप चले जाते हैं तो किसी और के पीछे लग जाते हैं। हमारे आपके परिवारों की कोई बहन अगर इस प्रकार के किसी कुचक्र में फंसती दिखे तो उसको तुरंत रोकने की जरूरत है। हमको सबको बताएंगे तो ऐसे दरिंदों का हम लोग जो है सर फोड़ने का काम करेंगे। Once again, Singh wouldn't allow us to speak directly with the young women to hear their thoughts on the issue. Who are you? Who has given you a right to decide about a girl's choices? Dr. Ranjana Kumari has been fighting for women's rights since the 1970s. She says these groups are taking the nation back to feudal times. You can see how much desperation is there. Muslim and Hindu marriage, how to stop that. That's the preoccupation at the moment. Many Hindu nationalists are paranoid that India is well on its way to becoming a Muslim majority nation. But that's not true. According to the most recent census, Muslims only make up 14% of the population. By 2050, they're expected to grow to 18%. Hindus, by contrast, are 80% of the population and will become 77% over the same time span. In Uttar Pradesh, a stronghold of the Hindu nationalist movement, lawmakers passed an ordinance against forced conversions last November. Those guilty can face up to 10 years in jail. A month after the law passed, a national newspaper reported that more than 90% of cases were against Muslim men, accused of forcing Hindu women to convert. The firebrand Hindu monk in charge of the state says the ordinance protects women and their honor. Critics say it's purely political. If some girl is wanting to convert herself and get married to someone who she loves, then it is her right. Over her own body, her own decision, Constitution gives her a right. By and large, women's lives are under control of the family and also of the society and community and these kind of goons who are around. But Hindu nationalists like Singh insist they're saving women. His group is working with police to track down interfaith couples. तो हमारे कार्यकर्ता अब आपको हर जगह मिलेंगे। तो रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे, ऑटो चलाते हुए मिल जाएंगे, पान की दुकान पर भी मिल जाएंगे और सिनेमा हॉल के बाहर भी मिल जाएंगे। और वो इन चीज़ों पे निगाह रखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा दिखता है तो उसकी सूचना देते हैं। सूचना के बाद जो लोग हैं जिनका काम है वो अपना कर लेते हैं। These groups often resort to vigilante justice. लड़के की पिटाई किश्तों में हुई। पहले कमरे के अंदर, फिर सड़क पर लोगों ने पीटा, और तीसरी बार जब वो पुलिस की हिरासत में था। Muslim men have been beaten and stabbed. Some have even been lynched. He can be seen attacking the man and burning him alive for allegedly indulging in love jihad. It's not always because they're in a romantic relationship with Hindu women. Sometimes they're just classmates. But instead of cracking down on these vigilantes, the latest law punishes the victims. In another village in Uttar Pradesh, we met one Muslim family whose lives have been destroyed since the new law. Their 22-year-old relative Jibril was arrested and jailed for running away with his 19-year-old Hindu neighbor. They haven't seen him for months. इनका संबंध तो पहले से था। पेपर दवा जात रहे, दोनों जने जात रहन के बाप महतारी जो है तो पठवर रहे साथ में हैं। वो मतलब इस बारे में हम बात उठाई कि ये क्या कहते हैं ले गए हैं तो धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं, फलाना है, ये सब चीज़ें वो कह रहे थे। The family says they were also accused of conspiring to kidnap and convert their neighbor.
police detained 13 of Jibril's relatives, including his mother and disabled brother. Several family members say that while they were in custody, they were tortured by police. बट्टे से सिर्फ लाठी से सफेद वाला बहुत होता है। करंट लगाते थे, करंट सर पे लगाते थे, यहाँ लगाते थे, पेट पे लगाते थे, सीने पे। बहुत दर्द होता था सर। हम लोग सर मुसलमान थे इसलिए हम लोगों को फंसाया गया। Police deny these allegations. The family lawyer says some of them were held for weeks until the couple was found and broken up and Jibril was arrested. अब तो नहीं भैया, हम रोते रोते तो जेल में अंधे हो गए। सब हमारा घर तोड़ के हैं, गेहूँ रहे, गल्ला रहे और जो चीज़ रहे सब हमारे उठाए ले गए हैं और सब हम बिल्कुल पैदल हैं बाबूजी। They say their neighbor's family and a group of vigilantes ransacked their home and farm. सब काट के सब फेंक दिए, सब काट कर फेंक दिए, इसी में सब बेकार गया है, सब काट डाले। तो हम जेल में थे तो सब खेत काट करके पेड़ भी काट लिए हैं उस तरफ के और तार खोल ले गए हैं और सब खवा दिया है, इसमें जानवर चराए हैं और बोल रहे जो बोलेगा उसको जान से मार देंगे। पुलिस से कहते हैं तो कहते हैं शांति रहो, वो ये कहते हैं कि शांति रहो, दंगा फसाद किसी प्रकार का न होने पाए। The woman's father denies the allegations. तो हमका बस यही जैसे अभी जैसे कोई कहा जैसे वहाँ आए हैं जैसे छूट छूट तो कहा कोई कहा बागचारी पूरी खाया ना है तो ठीक है, हमारी बिटिया लेके बराते ही गए ना है, कोई फर्क हमका ना है। हमारी तो इज्जत जो इज्जत गई पाई की पुलिस मदद की, बजरंग दल वाले मदद की, 76 मदद की हमारे, हम जौन कहे जौन मतलब की तो हमारे साँझ की गलत नहीं बात। The day after we visited the village, a source sent Vice News this video. Hindu neighbors once again threatened the family, this time because they spoke to us. The family lawyer says Jibril was granted bail for the forced conversion charge in July, but is still being held on other alleged crimes. The young woman is staying at this shelter. She's refused to return home. The authorities wouldn't let us talk to her. So this is no way they are trying to help women. If they really wanted to help women, they should look at the employment. They should look at women equally represented in parliament and state assemblies. They should look at women in terms of, especially COVID, the health issue, reproductive rights. Not here and there, one or two girls falling in love, with the boy, neighbor boy or somebody who are studying with. It's so natural, they're trying to just curb this whole thing. Since the country's most populous state passed the ordinance, several others have announced plans to enact their own versions. Singh says these laws are part of a struggle to revive the glory of a Hindu nation. And he's adamant that Indian Muslims must become Hindu by any means necessary. अब तो हिंदू हर प्रकार के संघर्ष करने के लिए तैयार है। जैसा भी संघर्ष ये करवाना चाहेंगे वैसा संघर्ष हिंदू करेगा। ये जिहादी जो है वो हमारे ही समाज से निकले हुए लोग हैं। ये कहीं से पैदाइशी मुसलमान नहीं है, अरब से आए हुए नहीं है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान जो है वो पूर्व में हिंदू था। तो हमारा तो उनसे सबसे आग्रह है कि आप गंगा गीता गायत्री की बात करो और फिर से हमारे में आइए, हमारे साथ आइए, शामिल होइए और अपने को हिंदू कहना प्रारंभ करो। आज नहीं तो कल आपको कहना पड़ेगा।